thanks for joining Value Talks once again. And आज का topic आपको पता है, it is a very very important topic. Your network is your net worth. And इस पे हम बात करेंगे कैप्टन विपुल चौधरी से. Vipul is the co-founder, as you know, of Value Talks. And I have personally been learning a lot about networking, very new insights about networking from Vipul. And that's why we thought that we must cover this. So, Vipul, while people had joined and मैं देख रहा था कि तुमने लिखा कि in the meanwhile we will start shortly. In the meanwhile, you can network, right? आपने टाइप Yes, किया sir, था. हाँ मैंने किया. Right. So it was very interesting, but I saw that nobody took this opportunity to network really. So they say it's not who you know, it's who wants to know you. That brings the success. So let's hear from you, Vipul. What is networking and why networking is so important, and the crux of this statement that your network is your net worth. Okay. Sir, I'll start with two disclaimers before we open the talk. One, networking is not a substitute for skills. Of course, it is not. बहुत से लोगों को ये लगता है कि नेटवर्किंग कर लिया तो सब सॉल्व हो जाएगा. Right. So it's not a shortcut to success. It's not a substitute for skills. And networking is not वो जो typically एक image है that networking का मतलब है being a wheeler dealer and drinking and dining या playing golf and all. That is not what networking is. Right. Networking, professional networking implies you have an objective in mind, and the objective is professional growth. Whether I'm looking for a job or I want to progress in my business, the idea is that it is for professional growth. It is not playing golf or wining dining and spending time there. Though if people do that in terms of progressing or forwarding their agenda, yes, a lot of people do that, but that's not what networking is about. Neither is it that मुझे काम नहीं आता है या मेरा प्रोडक्ट बहुत इंफीरियर है एंड मुझे लगता है कि मैं नेटवर्किंग करके आगे बढ़ जाऊंगा. That would be very temporary success even if I achieve. Right. So it is about giving an edge when everything is equal, then giving an edge to an individual or a business or maybe a group of individuals wherein they can get the advantage which others may not get. Right. So before we move Yes, ahead, I just want to request you that as you know, many of our subscribers and our audience जो है वो they are either switching career, they are looking for jobs, they if not now, maybe in near future, and also there are some who are wanting to be entrepreneurs, and there are some people who are already in business. So this is the kind of audience we have and the subscribers we have. So when you're covering networking, please cover these, keep these categories in mind. So you can ask me a particular question, sir, and why I say that I probably am capable of sharing some advice on this particular aspect, because it's not as a brag, but I have more than 10,000 connects on my LinkedIn account, and I can say with a lot of confidence that except for North Korea or Pakistan or some of the areas where one would not like to go, there is hardly a worthwhile city on the map where I'll not know someone. Wow. That's not a mean achievement. It's really something. So what I'll do is I'll share a small presentation with everyone so that it kind of brings out the concept, the soft skill which can actually be developed as a skill. What we are going to talk about today is
how networking can take you to different heights and how you can succeed with the help of networking. Of course, as Vipul brought out earlier, networking is not a substitute for skill. Your skill and hard work will still be required. So I'll start with the first slide which I prepared. Why do you need to network? One, to get consistently better opportunities, to get more opportunities, more options. And when you get more opportunities and better opportunities, it leads to more success. And one parameter of more success is that you're able to make more money, whether it is as a salary or it is more sales or more contracts. And I have realized that, a lot of times it is not the best product which gets picked. This at least happens in my industry. It is not always the best real estate which is invested in by people, but it is the one which is most visible, most recommended, or the most known product which is usually picked. Why does this happen? There is a psychological thing which is at play here, and I'll come to that. So what happens is, if I ask you, sir, how do you make any kind of a big decision, whether it is making a financial decision about a big investment, or children's marriage, education, buying a big automobile, any kind of a big high risk decision, how do you go about it? So naturally, I ask people around me in my own circle and ask them if they have, uh, if I'm planning a function or if I'm planning to buy a property, then I'll ask for somebody's this thing. Ki, do you know any good property consultant or something? So it's always through consulting people in my own circle, and if they recommend somebody, then I approach that person. So most of the times, any big purchase is usually done 85% of the times. It has been statistically studied that 85% of big purchases are done through referrals, and corporates are no exception. Other than the entry level or the junior leadership level, most of the times corporate they rely on hiring for senior roles via referrals, Yes, because the senior the role, bigger is the responsibility on that individual, bigger is the challenges, and bigger is the impact on the organization or the business of that particular role. Therefore, it is usually through referrals that people want to hire for senior positions. right. So, because any kind of an analysis and diligence wherein a bigger decision is needed, we usually lack the time and skills to be able to take a very diligent decision. That's why you have consultants in most of the high risk businesses, and same goes for senior level hiring. So when the industry or the employer, and I have covered this specifically for armed forces officers, when the industry is looking at an armed forces officer, they are looking at a me too kind of a product from their viewpoint. For them, all of us are same. And this used to be a joke when I was serving, and coursemate would ask, यार तुम गुरखों में फर्क कैसे पता करते हो? I am a Gurkha officer. So I would say, नहीं, they're all different. Because when I see them on a daily basis, I clearly see there is a difference between Ram Bahadur and Sham Bahadur and Bom Bahadur. He looks different, he talks different, he is. But to a army officer who's not a Gurkha officer, they all look similar. Similarly, when the industry looks at a Fauji officer, we all look similar to them. All majors, all colonels, our way of talking, the way we conduct ourselves, there is a lot of similarity. And therefore, a lot of generalization happens. And then कितना भी कोशिश कर लें, 20-20, 10-10, 30-30 साल की जो हमारी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाती है फौज में, उसकी वजह से हमारी लैंग्वेज, हमारे रिज्यूमेज, दे हैव दैट, जैसे होता है ना कि इफ आई एम अ जाट, मेरी अंग्रेजी कितनी भी पॉलिश हो जाए, वो मदर टंग इन्फ्लुएंस रहेगा. तो मेरे रिज्यूमे में वो यूनिफॉर्म का इन्फ्लुएंस, दैट लिंगो, दैट विच
कॉर्पोरेट एचआर हु इज नॉट फ्रॉम अ फौजी बैकग्राउंड, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है वो अंग्रेजी तो है बट उसका माइंड उसको रजिस्टर नहीं करता है। एंड देन देयर आर लॉट ऑफ जनरलाइजेशन, स्टीरियोटाइप्स, फौजी ऐसे होते हैं, फौजी वैसे होते हैं। एंड नाउ यू आर आस्किंग द पर्सन टू गिव यू अ हाई लेवल जॉब, जहां उसको ऐसे बंदे को हायर करना है कि काम भी हो, परेशानी भी कम हो। तो कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज होकर के वो क्या करता है, वो डिसीजन लेते हैं, अवॉइड कर देता है। So it is not that they don't want to hire you. It is that their decision making becomes so cumbersome, and they're not able to employ the diligence that they feel here. It is better not to hire rather than ये पंगे में कौन पड़ेगा. And that is Right. where if you have a network of people who are ready to Refer you. refer you, who are ready to vouch for you, is where networking helps. So how do we go about it? So first of all, when we are networking, ये मैंने एक बहुत बड़ा चैलेंज जो देखा है कि बिकॉज एंड दिस इज बिकॉज ऑफ टाइम का कंस्ट्रेंट, जनरली फौजी जो है अपने ट्रांजिशन के बारे में या तो तब सोचने लगते हैं जब वो डीजीआर कोर्स में गए हुए होते हैं, या बहुत बार तो उसके भी बाद में सोचते हैं, पहले 2 महीने तो वो अपना एडम फिट करने में निकाल देते हैं। एंड Right. देन उनके हिसाब से नेटवर्किंग होता है कि लिंक्डइन पर जाओ, 10 पुराने फौजी ढूंढो, उनको फटाफट ये बताओ कि सर मैं कैसे आपसे कहाँ मिला था, या हमारी यूनिट सेम है या कुछ तरह से, और अब मुझे नौकरी दे दो बस। एंड द अदर गाय गेट्स स्कैर्ड कि यार मैं इसकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, एज अ रिजल्ट वो अवॉइड करने लगता है, एंड नथिंग एक्चुअली हैपेंस। इट्स नॉट दैट ही डजंट वांट टू हेल्प, प्रॉब्लम उसके पास में उस वक्त वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती हेल्प करने की। मेरे जैसा डेस्परेट फौजी जो है वो उसको दिन में 3 दफे मैसेज डालने लग जाता है, सर वो मैंने आपको रिज्यूमे भेजा था, उसका कुछ किया आपने, देखा सर। बट इफ आई एम अप्रोचिंग ट्रांजिशन टुडे एंड इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम, और अगर मैं पहला स्टेप करूंगा, तो आई विल नॉट आस्क फॉर अ जॉब फ्रॉम समवन इन द कॉर्पोरेट, whosoever he may be, because that is making a big demand on someone's resources, and I don't even know कि उसके पास मुझे देने के लिए आज जॉब है भी या नहीं। तो आई सीक फॉर मेंटरशिप, आई सीक फॉर एडवाइस कि सर आप जो है नाइजीरिया में हैं, आप जॉब करते हैं, कैन यू गिव मी सम गाइडेंस, कैन यू बी माय मेंटोर। देन मेंटरशिप से नेक्स्ट स्टेप है वो कुछ समझाएगा, कुछ बताएगा, हाँ ऐसे कर लो, ये कर लो, अच्छा सर ठीक है मैंने ऐसे किया। देन नेक्स्ट स्टेप, after some time, after having been mentored, I'll go and I'll get some kind of a internship or maybe a small unpaid assignment कि सर can you give me a project, या मैं अभी पढ़ रहा हूँ, या मैं आपके साथ में कोई अनपेड इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज द मोमेंट यू आस्क फॉर पेमेंट, नेचुरल एक्सपेक्टेशन गोज अप कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ unpaid work projects to develop that trust that this person is capable of doing this kind of a work. And then third, probably, once you have crossed these two stages, then we go for referrals for jobs. डायरेक्ट जॉब भी नहीं मांगना है कि सर आप नाइजीरिया में हैं, इज देयर अ कंपनी यू कैन रेफर मी जो भी हायरिंग कर रही हो, या यू आर इन टीसीएस, इज देयर डू यू नो समवन इन इन्फी या किसी और डिपार्टमेंट में या अमेजोन में, समवेयर वेयर यू कैन रेफर मी, and if possible is there an opening where I may be considered in your organization as well. But that should be the third step when a certain trust, a certain relationship has developed with the individual. Day one, if I start asking for a job and send a resume, and then that is not networking, that is desperate approach for कि बस मुझे किसी तरह से कर दो अभी। एंड इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड डूइंग दिस, स्टार्ट नाउ। ये ना सोचेंगे कैसे होगा, करते जाएं तो हो जाएगा। Now, how does this happen? Where do I find the network? A lot of people when they start, the first challenge they face is कि मैं किससे बात करूं, कहाँ करूं, कैसे करूं। तो प्री ट्रांजिशन में एवरीथिंग बिगेन्स एट होम। सबसे पहले वो है ना कि चैरिटी बिगेन्स एट होम। आई हैव आई हैव बीन इन फौज, बट बिफोर कमिंग टू फौज आई वाज इन अ स्कूल। आई एम श्योर मैं किसी भी स्कूल से आया हूँ, एक दो लोग जरूर हैं जो कॉर्पोरेट में ठीक ठाक सा आज कर रहे हो। If I'm a 30-year-old, my classmates are also 30-year-old. If I'm a 40-year-old, my classmates are also 40-year-old.
So a lot of them would be employed in the corporate doing something. That is the first approach one should make. Try and develop a database. Then, if I'm staying in a certain society or a certain neighborhood, there are neighbors who are working in corporate. If I am doing graduation, if I've done my graduation from civil, there are people who are in my graduate friends who are in corporate. इसी तरह से जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर लिस्ट बनाता हूँ या मैं डीजीआर स्पॉन्सर कोई कोर्स कर रहा हूँ, वहां पर और एलुमनाई हैं और प्रोफेसर्स हैं. देन इफ मेरे कोर्समेट जो ऑलरेडी बाहर जा करके कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, आई हैव टू एक्चुअली डेवलप दिस डेटाबेस. एंड वंस आई डेवलप दिस डेटाबेस, उसके बाद उसमें से रेलेवेंस निकालना. मान लीजिए मैंने 20, 30, 40 अपना एक डेटाबेस बना लिया, एंड देन आई हैव अ रेलेवेंट 5-10 लोग उसमें से. आई स्टार्ट अप्रोचिंग देम फॉर एडवाइस एंड मेंटरशिप. आई कैन रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद माय स्पाउस. मेरी वाइफ भी किसी स्कूल से पढ़ी है, ग्रेजुएशन किया है, तो उसके भी कुछ फ्रेंड्स होंगे, उसके फ्रेंड्स के स्पाउसेस होंगे. आई कैन डू दिस विद माय सिबलिंग्स, आई कैन डू दिस विद माय पेरेंट्स, I can do this with my cousin, my close friends in uniform, unit officers, कुछ junior, कोई senior. So इस तरह से जब when I have a curated list, it is surprising that how much network we already have, all of us, except that we are not consciously thinking about it. But किसी को देखते हैं तो 100, 150, 200 लोगों की एक लिस्ट बनती है. Everyone may not be relevant to what I am trying to do, but as they say कि you can reach anyone with a 6 degrees of separation. मतलब मेरे और probably president of US में there is a 6 degree of separation. I never tried it, but LinkedIn पर अगर if you have a good network, so 2-3 degree of separation में काफी लोग मिल जाते हैं. So this is the first step. Now when we go to post transition, once you have started your transition journey, you have taken up employment, all functional roles, industries, everywhere they have professional networks. You have security वालों के ASI होता है, business का, commerce के वो है, HRM, strategic HRM है. You have different marketing forums, consultant networks. The world has a lot of networking opportunities, and one should join these professional networks and be a consistent contributor there. Then there are a lot of fuzzy networks even after you come out. LinkedIn is a very, very rich and relevant source of networking. Now, what are the action steps which people should take when they are trying to network? मेरे हिसाब से one should attend one relevant event या seminar या webinar at least once a quarter. If I am a security professional, I should attend a ASAI chapter event once a quarter minimum. If they are doing more than that, I should attend more than that. My industry should know me. If I'm a HR professional, there are a lot of HR chapters which HR organizations which have these kind of events. फिर वहां से जो मेरे लिंक्स बनते हैं, मेरे इंडस्ट्री के लिंक्स बनते हैं, उनसे मेरे को एटलीस्ट वंस अ वीक हो सके तो मीटिंग या गूगल मीट करना चाहिए. अगेन एक्सचेंजिंग आइडियाज, seeking mentorships, developing those relationships, not with an idea ki, networking should not be done with an idea to get jobs. That will happen. It should be done with an idea to build connections and maintain them, and to add value to you and to other person. It should be driven by shared interest, basically. Yeah, and I should try and make 2 new calls a week. अब आप मेरे से आज मिले एक इवेंट में, मिल लिए, बात खत्म होगी, आप मुझे भूल गए, मैं आपको भूल गया. Then how do I maintain that contact? If I drop you a message after the network, I mean after the event has happened, I stay in touch. I and stay in touch is not sending a good morning message. Stay in touch is wherein I share something which is of relevance to you, and I speak to you maybe. अगर मैं 10 लोगों से मिला हूँ महीने में, एक दो से एक बात करी, और वो ये वाला बड़ा चीजिंग ऑफ होता है कि ऐसे ही सर आपसे ऐसे ही मैंने बात करने के लिए फोन कर दिया. मैं तो सलमान खान हूँ नहीं, मेरे से ऐसे ही बात करने के लिए फोन किया.
Make it a relevant call if you are calling someone. Sir, when we had met the other day, you had said that you are working with, let's say, Infosys. Now I was reading something about Infosys here. Is it? Is this how it is happening? So that means you have taken adequate interest in the other person. वो वो वाला कि हेलो करने के लिए फोन कर दिया is not how you develop an active network. You have to come across as someone who understands that everyone's time is important. I value your time and I'm calling you with a valuable input or wanting to take a valuable input from you. So the call should have a concise agenda. WhatsApp should have a concise agenda. Huh? After a long period, once we are friends, maybe once in a while, how are you type message is okay. But other than that, it should be a message which has a certain agenda. So I should try and grow my network over a period of time. We call it, I mean, people like me who do networking very actively, I call it a 10 new connects a month kind of an thing. So it is, wherein I have 40 face-to-face leads if I'm attending one event every quarter. Typically, हर event में 40-50 लोग आते हैं. So I am able to meet with 40-50 people, have a face-to-face connect, have a cup of tea, बातचीत होती है. And in a year, I can develop 90 plus telephone leads. It's two a month, so approx 50 weeks into 52 into 2 वही 90-100 leads हो and 40 plus meetings or a Google Meet in a year. So if I'm able to develop a close network of 120 people, 150, 200 people from my industry, then I'll definitely start getting those information, those opportunities, that options which others are not getting. So why do people don't network? Why is it? I've realized people have a lot of fear of getting rejected. So when I say I have a network of 10,000 people on my LinkedIn account, sir, this 10,000 people implies I would have sent a request, a connection request to around 30,000 people. So invariably, two-thirds have not accepted that request. तो ठीक है. Hindustan में there are 150 crore people, 600 crore people on the planet Earth, millions on LinkedIn. How does it impact कि अगर कुछ लोगों ने accept नहीं किया? So इसका solution ये है, जैसे मैंने कहा, एक तो frontal assault नहीं करना है आपको कि मैं सीधा नौकरी मांगने चला गया. लेकिन रिजेक्शन से डरना भी नहीं है, because some rejections are part of the deal. Whatever I do, whenever I approach someone, the other person has a right to say no कि नहीं भाई मेरे को आपसे बात नहीं करनी है, काम नहीं करना है, I don't like your face. वो ठीक है, वो उसका right है. It is my duty to approach. It is the other person's right to reject or accept the proposal. So I should always be open to getting rejected and making the request to the next person to connect or uh, help or develop the network. Then a lot of people they give up too early. मैं अपना ही बताता हूँ सर. आई थिंक आई हैव बीन फौजी नेटवर्क की अगर बात करें तो फॉर लास्ट 10 years आई हैव बीन अ कंसिस्टेंट नेटवर्कर इन फोर्सेस नेटवर्क. आपके साथ कंसिस्टेंट है इसमें. उसके अलावा I have been in my business networks for last 10 years. I've been a member of a lot of National Association of Realtors, etc., etc. And I'm very consistent there. I don't give up. लगे ही रहते हैं, तो लोग जानते रहते हैं. When you are present, they see consistency, your visibility grows. And one keeps on repeating it. So when you keep on repeating your continuous action and attendance, it gets you results. You become visible, people trust you more. You develop that credibility. Now, obviously, since I have been in real estate, so being in a real estate network is my professional requirement. Similarly, if someone is in cyber security, being in a cyber security network should be their professional requirement and they should be very, very visible there. And थर्ड जो मैंने देखा, ये मैंने खासकर फौजियों के साथ बहुत देखा, स्पेशली व्हेन दे शॉर्ट ऑन टाइम, यार लोग बाहर मदद नहीं करते. आप नेटवर्क अगर एक्सपेक्ट या कोई भी आप एंडेवर ये सोच के कर रहे हो कि भैया मुझे तो सक्सेस ही मिलेगी, तो बड़ी दिक्कत है, बिकॉज तेंदुलकर भी जीरो पे जाता है बहुत बार.
and he'll not make a century in every game. So I have realized that 20% people only would be able to help, and I don't know which 20%. सो मेरा धर्म ये कहता है मुझे 100 को अप्रोच करना है, उसमें से जो 80 मेरी हेल्प नहीं कर पाए उनको भी ग्रेटफुल रहना है, या एटलीस्ट आई डोंट हैव टू बी बेटर अबाउट इट, एंड दोस 20 हु हेल्प मी आई हैव टू बी वेरी वेरी grateful. And at times people want to help, they do not have options to help. So one should not Absolutely. network with the idea कि भैया मैं तो टॉप 5 लोगों से नेटवर्क कर लेता हूँ मुझे नौकरी मिल ही जाएगी. आप टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 लोगों से जरूर नेटवर्क कीजिए, और जो हेल्प कर पाए वो भी अच्छा है, जो नहीं कर पाए उनके लिए बेटर होने की जरूरत नहीं. आई डोंट नो व्हाट वर देयर रीजन फॉर नॉट बीइंग एबल टू हेल्प, बिकॉज वन थिंग व्हिच आई हैव रियलाइज्ड, 90% ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स वांट टू हेल्प ईच अदर. अदरवाइज सड़क पे तो लिफ्ट किसी को कभी मिलती ही नहीं, लोग अनजान को हेल्प कर देते हैं मुसीबत में. And here, Vipul, I think one more point which is important is that while you're networking, you should not never lose sight of your 6 degree of separation, which is there. So maybe that person may not be help you, but his connection may be able to help you. You know, बहुत कुछ है so सर, it पता ही नहीं. solves the purpose. एंड एक चीज है सर, वंस यू गेट द फर्स्ट ब्रेक दैट इज द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी, इट इज नॉट द एंड ऑफ योर जर्नी. आपको वहां से आगे बढ़ना है. सो जिस भी इंडस्ट्री में आप हैं उस पर अपना फोकस करें, और या जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, मान लीजिए आज मेरे को अच्छा ब्रेक नहीं मिला एंड आई विश टू स्विच टू अनदर इंडस्ट्री. फौज के बाद कुछ नहीं मिल रहा था तो मैंने शाहरुख खान ने क्या किया, शाहरुख खान ने टीवी सीरियल से स्टार्ट किया था ना, बट ही वांटेड टू बी अ मूवी स्टार, ही वाज कंसिस्टेंट, लगा रहा, आगे फोकस करता रहा. अच्छा, दूसरा वो स्पैमिंग वाला इशू नहीं होना चाहिए. अपना खुद का ही आपने कुछ किया है, बट स्टे कनेक्टेड. मैंने आज एक कुछ अच्छा काम किया, कोई मेरे अच्छी प्रॉपर्टी आई तो मैं उसको अपने व्हाट्सएप अपडेट में डालूं. कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पैम भी चलता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. और दूसरा सर, एक जो है ना, एक एक चीज हम भूल जाते हैं, अपना काम निकलने के बाद में आपने वापस से रिकनेक्ट कैसे किया. हाउ डिड आई, मतलब वो है ना, फॉरवर्ड कनेक्शन तो कर दिया, रियल कनेक्शन कैसे किया. Very important. क्योंकि उससे फायदा क्या होता है सर कि आपका एक एक दूसरा नेटवर्क भी बनता जाता है, जहां से कि आपको ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिसका आपको आइडिया नहीं होता है. वेयर पीपल आर, यू हैव हेल्प पीपल, दे इन टर्न हेल्प समवन, और वो एक 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 कंप्लीट सर्कल टाइप बन जाता है. सो what after the first break, I would say increase the effort in your relevant network. जब आपको फर्स्ट ब्रेक मिल गया है, और यहाँ पे खत्म नहीं हो जाना चाहिए. नेटवर्किंग इज नॉट जस्ट कि मैं अब यहाँ से नौकरी मिल जाए और मेरा नेटवर्क जो है नेटवर्किंग खत्म हो गया. डेवलप कंटेंट, यहाँ से आपको और आगे बढ़ करके जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनसे अपना नेटवर्क को और डीप करना चाहिए. कंटिन्यूस एक्शन, अटेंडेंस विल गेट रिजल्ट्स. इसमें समय लगेगा सर, रेपिटेशन करते ही रहना है, एंड इट इज नॉट 100% बट प्रोबेबिलिस्टिक है. एंड नेटवर्किंग इज अ स्किल विच शुड बी लर्न एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूव. ओनली थिंग इज प्लीज गिव ऑल्सो, डोंट जस्ट टेक. यू नो, नेटवर्क्स आर टू वेज, आज लीजिए कल दीजिए. टेस्ट इज, आपने अपनी फर्स्ट जॉब के बाद हाउ ऑफन विल यू कम बैक टू योर फ्रेटर्निटी एंड ऑफर अ स्मॉल जॉब और इंटर्नशिप असाइनमेंट, या कोई छोटा असाइनमेंट, या किसी को मेंटरशिप से हेल्प करेंगे. You should test this for yourself, sir. So I'll just show you one slide which can be helpful as a summary. So, it's like you first have to gather your data. Once you gather data, only then you'll be able to identify the relevant people. It usually does not work the other way around. People say quality, no. First quantity, only then it is quality. खान में बहुत सारी खुदाई करेंगे तभी हीरे निकलेंगे जो आपको चाहिए. देन इनिशिएटिंग कनेक्ट, उन लोगों से संपर्क बनाना, बातचीत करना, शुरुआत करना, एंड देन मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स एंड गिविंग बैक टू पीपल फ्रॉम वेयर यू कम.
It could be अगर आपको आपके graduate college के connects के through help मिली है, give it back to them. If it is your Fauji fraternity which is helping you, give it back to them. If it is your school connects which has helped you, give it back to them. Because only then you complete the loop. This was the small presentation. You gotta focus on your